A very important concept in differentiation is derivative of composite function. Composite function क्या है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं. Suppose x is a function, suppose z is function of x, z is a function of x and y is function of z. इसका मतलब ये हुआ कि x is an independent variable, z is a dependent variable. z अपने वैल्यू के लिए x पे डिपेंड करता है. x की जैसे वैल्यू बदलेगी वैसे z की वैल्यू बदलेगी. तो z अपने वैल्यू के लिए x पे डिपेंड करता है, लेकिन y अपने वैल्यू के लिए z पे डिपेंड कर रहा है. तो होता क्या है, x चेंज होगा तो z चेंज होगा, z चेंज होगा तो y चेंज होगा. तो अल्टीमेट डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, and ultimate independent variable is x. Now, if I want to find out derivative of y with respect to x, that is, I want to find out the change in y, ratio of change in y as per change in x. तो ये तो एक्चुअली कॉम्पोजिट का डेरिवेटिव हो गया, क्योंकि y has become composite function of x. क्योंकि y अल्टीमेटली x पे ही डिपेंड कर रहा है, सिर्फ थोड़ा सा इनडायरेक्टली. x की वजह से z चेंज होता है, z की वजह से y चेंज होता है. सो y इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन x. तो अब अगर मुझे ऐसा डेरिवेटिव चाहिए कि x चेंज होने से y में कितना चेंज आया, ये अगर मुझे चेक करना है, तो आई विल हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. और ये होता है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन. एंड नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट दिस डेरिवेटिव. नाउ व्हाट वी विल डू इज, now here y is composite function of x. Now what are we going to do is, I'll find out derivative of z, find out derivative of y with respect to z first, because y is dependent on z. As per this function, y is dependent on z, so I'll find out derivative of y with respect to z. क्योंकि y के लिए तो z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, g dash of z. Then what next I'm going to do is, because z is also dependent on x, so I'll find out derivative of z with respect to x, f dash of x. लेकिन मुझे ये डेरिवेटिव चाहिए ही नहीं था. I didn't wanted to find out what is the change in y due to change in z, or what is the change in z due to change in x. I am not interested in that. I am interested to find out how much is the change in y with the change in x. So I want to find out this dy by dx. What does dy by dx means? Change in y as per change in x. So what I'll do is, I'll multiply dy by dz into dz by dx. So obviously dz will get cancelled, and I will get dy by dx, and that will be d dash of z into f dash of x. I can also write it as g dash of z. Now z can be written as z is f of x, so I'll write down f of x into f dash of x. This is my derivative. और इसको क्या कहा जाता है, चेन रूल. सबसे इंपॉर्टेंट चेन रूल. It's very important concept. I'll again explain it to you that when y is a function of z and when z is a function of x, now x change होगा तो z change होगा, z में changes होंगे तो y में changes होंगे. Now I want to find out dy by dx, that is, I want to find out change in y as per change in x. This is what I want to find out. But y is not directly a function of x. Y is indirectly a function of x. So y is actually function of z and z is function of x. तो x बदलेगा तो z बदलेगा,
z बदला तो y बदला, तो हम लोग डेरिवेटिव भी वैसे ही निकालेंगे. I'll find out z, that is I'll find out change in z due to change in x, and then I'll find out change in y due to z, और फिर हम लोग बस इनको मल्टीप्लाई करेंगे. x बदलेगा तो z बदलेगा और उनका एक रेशियो आएगा जिसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं. z बदला तो y बदला तो उसका भी एक रेशियो आएगा जिसको हम लोग डेरिवेटिव बोलेंगे. लेकिन मुझे इनका रेशियो नहीं चाहिए, मुझे रेशियो चाहिए चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x. I want dy by dx. So I will say dy by dz into dz by dx. This is my chain rule. Let us take an example of a chain rule. How to use this chain rule? Suppose y is equals to x raised to 5. Now what is your derivative in this case? dy by dx is 5x raised to 4 because this is in the form of x raised to n. So n x raised to n minus 1. But this was a direct function. But suppose y is x plus 4 bracket raised to 5. Now see how to identify the composite function. This is one function, x raised to n. Ma'am, your voice is lagging.